अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत हो चुकी सियासत, अब इतना अरसा हम मसलसल सियासत पे गुफ्तगू करते रहे हैं। यानी जब पिछली असम्बली ख़त्म हुई, फिर निगरान हुकूमत आ गई, फिर निगरान हुकूमत के दिनों के बारे में, फिर निगरान हुकूमत प्रोलॉन्ग हुई, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आया, बल्ले का निशान मिला नहीं मिला, अल्टीमेटली नहीं मिला, फिर इलेक्शन हो गए। मैं ख़ुद यकीनन सियासत के बारे में थक चुका था, तो इसलिए आज मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा। इसलिए भी बात नहीं करना चाह रहा कि आज आलमी यौम ख़वातीन, इंटरनेशनल डे ऑफ वेमेन, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में एक ऐसी ख़ातून है जो ग्रीस तक यानी यूनान तक मैराथन रेस में हिस्सा ले चुकी हैं। और मुझे भी अभी पहली दफ़ा पता चला कि मैराथन किसी जगह का नाम है। हम तो मैराथन ये समझते रहे कि जहाँ कोई 500,000 बंदे दौड़ रहे हो उसका नाम मैराथन हो जाता है, लेकिन मैराथन एक जगह है। ज़रूर हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की किसी ख़ातून का, किसी फ़ीमेल का इंटरनेशनल लेवल पर फुल मैराथन में हिस्सा लेना बजाते ख़ुद एक बड़ी रिकग्निशन है, एक कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ चूँकि पाकिस्तान के तासुर के हवाले से, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से बड़े सवालात पैदा होते हैं, तो मैं इटली के सुबकदोश सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी आंद्रे फेरेरेसी और उनकी अहलिया मदाम अल्बाना से भी बात करूँगा, आपके सामने पेश करूँगा कि उनका पाकिस्तान में स्टे कैसा रहा, पाकिस्तान से क्या यादें लेके गए हैं, और मैं तो समझता हूँ कि वो इधर से जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर साबित होंगे वापस अपने मुल्क में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले हिस्से में इस वक्त मोना खान साहिबा हमारे रूबरू हैं, जिन्होंने यूनान में मैराथन में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक भी हम देते हैं, और बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। यहाँ तो औरत मार्च होता है हर साल और उसमें कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं, लेकिन आप तो आलमी सतह पर एक लंबी दौड़ में आपने हिस्सा लिया। कैसा लगा आपको? मुझे जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तान के अच्छे इमेज पे जब हम काम करते हैं, तो यकीन माने हमें ये लगता है कि हम कुछ हैं, अदरवाइज़ हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए सभी काम कर रहे होते हैं। अब ग्रीस की क्या ख़ास बात यह है कि वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट शौकत साहब, ये सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान से जब लोग जो जाते हैं इलीगल तौर पे या गैर कानूनी तौर पे, वो तो वहाँ का तो इमेज होता है कि डंकी लगा के वहाँ से पहुँचें, तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी इसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ग्रीस क्योंकि वो हब भी है, उसमें ये डंकी लगा के क्या मतलब? ये आई डोंट नो, क्योंकि अब एक तरीका है, एक रास्ता है यूरोप जाने का। वो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी जाते हैं वो यूनान या इटली के रास्ते, बिल्कुल यूनान के रास्ते ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम, और यूनान के लोग भी ये जानते हैं बिल्कुल। जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, उनको लगता है कि वो इसी मकसद के लिए आए। अब जबकि ये जो मैं ग्रीस की आपने जिस तरह से बताया कि इसकी खास बात क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये जो है पाकिस्तान की तारीख में जितने भी हमारे जो एथलीट्स रनर्स हैं, वो मेजर मैराथन जापान, यूएस, लंदन, वहाँ पे जाते हैं। अब जिसकी तारीख है, जो रनिंग है, जहाँ से वो पैदा, आपके कोच मोहम्मद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन ये जो मैराथन गांव आपने बताया, ये कोई जगह का नाम है, कोई टाउन है, कोई विलेज है, और इसकी क्या तारीखी हैसियत जो आपने देखी? आपकी फुटेज भी हम चला रहे हैं साथ। नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। आप जिस तरह से कह रहे थे ना कि जितना लोग जमा हो जाते हैं वो मैराथन है, इसी तरह सेम लाइक मी, मुझे ये लगता था कि जो चैरिटी होती है, कोई कॉज होता है, तो मैराथन है, तो इस वजह से। और मुझे ये भी लगता था जस्ट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मैं शुरू में जब भागना शुरू किया तो मैं 5 किलोमीटर को मैराथन कहती थी। फिर आई जस्ट गॉट टू नो, नहीं भाई, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 42.2 किलोमीटर। आपने कितना दौड़ लगाई? मैंने 42.2 किलोमीटर, मैंने 1 मिनट मुझे जरा यकीन करने दें, यानी आपने 42.2 किलोमीटर आपने दौड़ लगाई मसलसल। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नहीं, क्योंकि इसकी भी वजह ये थी, कमिटमेंट थी, वादा था, और क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान की ये लड़की हैं
जिन्होंने 42 किलोमीटर यानी उससे भी ज़्यादा दौड़ लगाई है और मसलसल दौड़ी हैं। ये नहीं कि आधा आज कर लिया, फिर आधा अगले हफ्ते, फिर आधा उससे अगले हफ्ते। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं ज़रा आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, ये आपने इनकी कोचिंग की, आपने इनको कैसे इतना मोटिवेट किया? भाई 42 किलोमीटर मतलब है, लोग 1 किलोमीटर हो तो गाड़ी पे जाते हैं, इन्होंने 42 किलोमीटर ये मसलसल दौड़ती रह गई। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें लिया। सबसे पहले तो ये बात है कि रनिंग टोटली माइंड गेम होता है, ठीक है। तो जब ये मेरे साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त ये आई थिंक पहले दिन 2 किलोमीटर रन किया था। तो उसके बाद मैंने इनको इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई, 4 महीने तक हमने ट्रेनिंग की और 42 किलोमीटर पे पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये रात देर तक जागने के बाद सुबह 4 बजे रनिंग के लिए रेडी होती थी। ये सबसे बड़ी इनकी मोटिवेशन थी। यानी 2 किलोमीटर आपने पहले दिन ही इनको दौड़ा दिया और 42 किलोमीटर तक आप ले गए। अब पाकिस्तान से जब ग्रीस में या आप दुनिया में और भी गई हैं बहुत सारे मुल्कों में, पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेट सा इमेज है बाहर। तो जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़की एक ट्राउज़र में, जीन्स में या रनिंग ड्रेस में है, उनके दरमियान है, तो उनको अजीब सा नहीं लगता? जी, उनको अजीब सा नहीं, बहुत अजीब सा लगा। क्योंकि वहाँ जो ग्रीक मीडिया, सोशल मीडिया, उन्होंने तनकीद की थी कि एक पाकिस्तानी खातून आके रनिंग के साथ साथ पाकिस्तान का परचम कैसे लहरा सकती हैं। तो उनको ये कोई क्योंकि मेरा मकसद मैसेज देना था, चाहे वो इस तरह से जाता है या उस तरह से, ये तो मैसेज जा चुका कि भाई पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब ये ग्रीक मीडिया ने जब तनकीद की तो मैं यहाँ पे अपनी मीडिया को भी अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने बहुत साथ दिया। वहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है, आपने मीडिया की बात की, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फीमेल्स हैं, एंकर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं। मुझे आप अकेली नज़र आई हैं इस एथलेटिक्स में, और भी कोई आपके साथ होती हैं या नहीं? अनफॉर्चुनेटली यही एक वजह थी मेरी रनिंग के लिए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि नो डाउट जुनेद जो है बड़े ज़बरदस्त से एथलीट रनर्स हैं, जियो के जो एंकर हैं, बिल्कुल जियो के एंकर हैं, तो मुझे वो तो बॉस्टन में भी मैं समझता हूं, बॉस्टन गए हैं, लंदन गए हैं, और अभी भी वो इस पे बड़े फोकस रनिंग को रखते हैं। तो मुझे मेरे कोच ने मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा किया, यूसुफ साहब ने बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहती हैं, वो आपकी मेल जो है आगे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम भी किसी से काम नहीं है। तो ये एक वजह थी जिसने मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा कि हम भी भागकर रन, अपनी दौड़ कर रन करके दिखाएंगे। लाहौर में भी आपने मैराथन में हिस्सा लिया, वो कितना दौड़ थी? वो हाफ मैराथन थी। वो हाफ मैराथन इस लिहाज से क्योंकि हम पोलियो के लिए। हाफ कितनी थी? यानी 21.1 किलोमीटर। यानी आप जब हाफ कहती हैं तो कोई 1-8 किलोमीटर पे तो आप रुक नहीं रही, आप 21 किलोमीटर अभी भी कह रही हैं। वो एक्चुअली देखिए यही तो मैराथन है, क्योंकि आपको पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अच्छा ये भी बता दूं कि जब हम ट्रैक पर आते हैं तो फिर वहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जिस तरह से एक फौजी, एक जो मुजाहिद जो होता है, वो अपनी उस पर जब जंग के लिए जाता है ना, अब उसको या तो जो जीतना होता है या फिर जो है अपनी जान देनी पड़ती। इसी तरह जब हम ट्रैक पर आते हैं तो हमारी जिंदगी उस पर लगी हुई होती है। अगर फॉर सपोज खुदा ना खास्ता कोई एथलीट या रनर अपना डिस्टेंस कंप्लीट नहीं करता तो आप यकीन मानो उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और जितने हमारे क्लब्स हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो जितना टारगेट करते हैं तो वो आपकी सोच है। तो उस लिहाज से जब ये सारी चीज़ें आप ये समझें कि हम पूरे तैयार होके लैस होके फिर अपनी रनिंग के लिए। आपने लाहौर में भी हिस्सा ले लिया, मैराथन। अब मैं मैराथन कहूँगा, सुनने वाले पहले समझेंगे कि जो आम हर जगह दौड़ होती है उसको मैराथन कहते हैं। मैराथन यूनान का एक गांव या शहर है जहां से ये ट्रेडिशन शुरू हुई, उसकी कोई तारीख भी तो होगी। बिल्कुल है। जिस तरह से देखें, मुझे यूनान की इतनी खूबसूरत बात लगती है कि उन्होंने अपनी तारीख को कैसे जिंदा रखा। मतलब पूरी दुनिया मैराथन कर रही है लेकिन उसका एक वॉरियर था, एक जिसने अपनी न्यूज बताई थी, यानी मुजाहिद था। बिल्कुल, उसने जंग जीती थी और उसने ये खबर दी, और जब खबर देने गया ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने उस लेगेसी को कैरी किया हुआ है। तो अब लोग इसी जो रनिंग वहीं से पैदा हुई है, फिर वो पूरी दुनिया में जो इस तरह से स्प्रेड हुई है, और ये विलेज का नाम है। अच्छा यहाँ पे भी बड़े मजे की बात है, जिस तरह से हमें पता चला, रिसर्च की, यहाँ पे एथलीट्स रनर्स को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में भी वो भी पूछते अच्छा ग्रीस, क्योंकि कोई ग्रीस ही नहीं गया ना, ग्रीस ही नहीं गए, वही गैर कानूनी जाने वाले नहीं
आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं, लेकिन अब तो जा सकते हैं ना, अब तो रास्ते तो खुल गए हैं, अब तो लोगों को पता है कि लोग वहाँ पे रनिंग करने। आगे आपके क्या प्लान है? मैं तो बात कर रहा था कि क्या बस अब एक बार हो गया काफ़ी है या यू विल कंटिन्यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं रनिंग कर रही थी ग्रीस में, क्योंकि 21 किलोमीटर हिली एरिया था वहाँ पर, बहुत मुश्किल ट्रैक था, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है जिसमें मैं भाग कर आई हूँ, रनिंग कर आई हूँ। उसके बाद तो यानी हम आपको ये चैलेंज नहीं कर सकते कि मरगला पे हमारे साथ चलें, देखते हैं कौन आगे निकलता है। आप कर ले चैलेंज। मैं कश्मीर गई हूँ ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। ओ यस, तो आपको पैशन चाहिए, आपको जज्बा चाहिए, आपको मरने का भी जज्बा होना चाहिए कि बस अगर कुछ भी हो जाए नहीं करना। तो मैं बिल्कुल, जब मैंने ये रनिंग की तो मैंने कुछ टाइम के लिए सोचा मैं क्यों रनिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ही रनिंग से हट जाऊंगी तो बाकी को कौन मोटिवेट करेगा। उसके बाद मैं वापस आई हूँ, मैंने 2-3 जो मैराथन कराची में पार्टिसिपेट किया, फिर लाहौर गई हूँ, अभी फिर जो है इंटरनेशनल मेजर मैराथन जो है बर्लिन में जो है वो प्लान है कि हम वो जाएं, वो दैट्स इन सितंबर अगस्त, अभी हमारे पास डेट्स हैं, तो अभी यहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं रनिंग को कंटिन्यू किए हुई हूँ और इस मैसेज के साथ कि आप सब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। चलें, दैट्स अ ग्रेट पैशन। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई। मोहम्मद यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इटली के सबकदोश एम्बेसडर आंद्रे फेरेरेसी और उनकी अहलिया मादाम अल्बाना हमारे रूबरू होंगी। हम उनसे पाकिस्तान के अंदर जितना उनका स्टे था वो क्या यादें लेकर वापस गए हैं और पाकिस्तान में उनको पसंद नापसंद क्या चीज़ थी। ज़ाहरी तौर पर तो वो बड़े खुश वापस गए हैं, लेकिन उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़रा अपने मुल्क के बारे में अजीब अजीब सी बातें सोचते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन देखें बाहर के लोग जब पाकिस्तान में रहते हैं वो कितनी खुशी और एक्साइटमेंट का इज़हार करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इटली और पाकिस्तान हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। इटली और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं, लेकिन आलमी सतह पर वो इलाकाई अमूर हों या आलमी अमूर हों, वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफार्म हो या कोई और प्लेटफार्म हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी इटली और पाकिस्तान का मोर और लेस एक मौक़िफ़ रहा है बहुत सारे इश्यूज़ पर। पाकिस्तान में इटली का नया ट्रेड सेंटर भी खुला है, ट्रेड ऑफिस खुला है और उससे भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को बूस्ट मिल रही है। फिर पाकिस्तान की साइजेबल लार्ज कम्युनिटी वो भी इटली में रह रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इटली की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो एक क्लोज़ बॉन्ड है जो इटली और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ हैं। मैं पहले तारफ़ करा देता हूँ, हिज़ एक्सेलेंसी आंद्रेयाज़ फेरेरेसी, ये पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर आजकल जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मादाम अल्बाना फेरेरेसी, थैंक यू वेरी मच for your time. Obviously you are in the process of leaving Pakistan, and looks to me that only yesterday you came to this country and now you are completing your turn. But how, Excellency, you talk about, if I ask, the state of relationship between Italy and Pakistan at the moment? 2023 marked the 75th anniversary of the diplomatic relations between Italy and Pakistan. I see. That means that we had 75 years of friendship, Yes, without problems and with a lot of collaboration. We collaborated both in the United Nations a lot, other international fora. We collaborated economically. We had a lot of also infrastructural works in the past. And now we are improving our relations in social and migratory issues, because Italy is hosting the largest Pakistani community in the European Union. I see. Yes, it's almost 200,000 plus other 100,000 to be legalized. I see. The reports are also very fruitful in the cooperation to development. We closed recently the Pakistan-Italy debt swap agreement. I see. So it was more than 100 million euros Okay. as an agreement. And Italy is providing assistance in other fields like olive oil culture or like
mapping of the glacier in the Himalayas. I see. So Big environmental issues. Yes, we have cultural reports. We have touristic exchange. I see. We have two archaeological missions, very important in Pakistan, and also an increasing flow of visitors. Last year we gave 15,000 visas for Pakistani for tourism, family reunification, study, and business. Okay. Madam, how has been your stay in Pakistan? I understand your both daughters, they were born here, so almost half of they are the Pakistanis, you know. It was a very nice 4 years. I have to admit, when I found the news that we are coming to Pakistan, I was excited because I didn't know much about it, but my husband convinced me that we will have an amazing time. Okay. And for me, it was really, really special experience. When he promised you that it will be an amazing time, how these 4 years have been? Even better from what we thought. Okay. I got too much involved into so many embassy events and also made a big list of friendship with the Pakistani women entrepreneurs, and I've learned a lot from this culture. We realized that the people is amazing and the hospitality is really something. That's also a matter of pride for us, that if you really getting these impressions back to Italy. Excellency, in the modern world, strategic relations are very good at the level of, at the platform of United Nations. I understand we always enjoyed very good relations, but now trade and economic relations that are becoming a cornerstone for relation between any two countries or group of countries. So how has been the trade relationship at the moment between Italy and Pakistan? Then when I arrived 4 years ago, COVID was beginning, so there was a decrease. But now, last year, we went far beyond the situation before COVID. Okay. We had an historical result of 2 billion euros of trade, bilateral. 2 billion euros? 2 billion euros. Pakistan has a surplus of 300 million. Congratulations. And I'm sure that trade is good, but it's not matching the potential between the two countries. I think that the natural trade between Pakistan and Italy should be between 4 and 5 billion euros. It should be. That is the potential you are talking of. Minimum. Okay. We recently opened a office of Italian Trade Agency, ICE. It's the first time in Islamabad. And I'm sure that this technical office will provide an excellent boost for bilateral economic relations. Okay. I would also like to mention that thanks to a work we made with the Central Bank of Pakistan, we could bring all the remittance from Italy to legal channels. Okay. And so we could verify that the remittance from Pakistani community from Italy every year are around 1 billion euros. 1 billion 1 billion euros. So your overseas workers are sending back to families. Trade with Italy is surplus in favor of Pakistan. Yes. And then over 1 billion euro is the remittances from Italy to Pakistan. Yes. But those remittances are sent by workers who create additional GDP in Italy. Okay. So we don't see it as a penalty. On the contrary, whatever money they send here, they created a lot of richness in Italy and for our country. Madam, I also witnessed, rather we also witnessed a lot of efforts from yourself about a fusion of cultures. I remember there was a designer from Italy, she was here and you organized a kind of a show, you know. How this experience has been for forging greater, you know, people-to-people contact between the two countries through this fusion of cultures? I feel as the two countries we have a lot of things in common. So from the beginning I said that the people are having a lot of similarities in a lot of sense. First of all, I appreciate so much that Pakistanis put family first, which is same in Italy. I see. We have the same way of
eating pasta from the same pot, same as you eat from your main dish. We are loud as well as you are. We like to be together and enjoy our meals all together in the table. And it was very easy for me to organize the fashion show and a lot of other cultural events, especially our Italian designer when she had her dress done from embroidery from chitral. And she mentioned very nicely in front of the media that her dress is made in Italy, made in Pakistan. So it was a nice show, and it's with the people of Pakistan, it's very easy to organize big events. Italy itself is considered as a land of fashions, designing. So whether some replication of Pakistani designs and dresses, they can find their place back in Italy? Yes, obviously the Italian designer that was here, Stella Jean, she's very famous all over the world. She's using the embroidery from the north in her Milan Fashion Week. So in Italy they appreciate a lot embroidery and handcrafts. So, and here is the place. As a diplomat, Excellency, you've been traveling to different parts of Pakistan. How did you find this land, the people, the cultures? Well, Pakistan population is more than half of the European population. So it's a great country with a lot of variety. And we used to say that diversity is a richness for a country. So you find different people, different languages, different mentalities, different way of dressing. But what makes feel common in your country is the love for your nation and the proud to be Pakistanis. That's a great thought, Excellency. नादरीन, बड़ी बात है कि पाकिस्तानी चाहे मुश्किलात में हो या आसानी हो या ज़िंदगी आसान हो रहे या मुश्किल रहे, ज़ाहिर है महंगाई है और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन एक बाहर के सफ़ीर साहब की ये ऑब्ज़र्वेशन हमारे लिए बड़ी माने रखती है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और फ़ख्र करते हैं, और यही पाकिस्तानियत है। मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम है और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दे हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, यू सी, क्या इंप्रेशन बने इनके, मैं ज़रूर पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ख़ुसूसी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और पाकिस्तान में तैनात इटली के सफ़ीर एक्सेलेंसी आंद्रेआ फेरेरेसी और मादाम अल्बामा फेरेरेसी हमारे साथ मौजूद हैं। मादाम, electoral activity is always a kind of festivity, lot of activity, lots of people gatherings and then lot of posters. How you feel whenever such a situation you are in anywhere in the world? The electoral campaigns are done in every democratic country, and we saw them everywhere. So we are leaving just before it gets very much intense here on that part, and we will be following whatever happens in the future. Excellency, you talked of a very important thing, that Italy is a democracy, Pakistan is a democracy, Italy is in solidarity of democracy in Pakistan. You have also seen a lot of court activity, for example, a lot of legal activity. How personally you feel encouraged that Pakistan remained on the democratic path and elections are a culmination or a further step towards a democratic process? Well, this is every country has their rules, internal rules, and it very much depends on the rapport also with the judicial, with the main institution, the president. So there is a balance that every country founds to express their preference. Madam, I understand before coming to Pakistan, you have also been working on the grassroots with the communities at different level in medical field or other fields. You have been having interaction here. I understand you were president of the Foreign Women,
Yeah, kind association, you see. So how you found the people here in the entrepreneur, sector? I felt from the beginning that I should be part of every conference for women entrepreneurship because there is a lot of potential. I see. I really appreciate all the women I met here are very strong personalities, very well educated, very good mothers. So me being a mother first of all and representing Italy as well, I try to attend as much as possible in the health field and then entrepreneurship. A lot of we did charity with the Foreign Women Association that gave me immense pleasure of visiting schools in need and where I could learn more from the future. That I see these young generations and I see a potential. You are again and again talking about family. So a unit of society is a family. That's, I think, very close to your hearts, even Italy and even in here. Yeah, I think I grew up and in Italy we are so much into that of taking care of the family members and still appreciating the family bonds. And this is how we felt here. I mean, in a lot of Pakistani families, it felt like home. It felt the hospitality was really much impressing me all the time. Excellency, when you arrived here, you had an embassy, but you started a new project and now, a real embassy is there. How this achievement you feel that was pending for a long time and now it has been accomplished? No, it was a great proud actually. The government of Pakistan, when moved the capital to Islamabad, gave to foreign embassies some plots where they can build, just over to encourage them to move from Karachi before. And Italy had 2 plots here. I see. But for many years we didn't find whether the financing or whether the procedures to build. Now, thanks to the support of my ministry, to the support of the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan and all Pakistan institutions, the CDA, we could proceed very expeditiously so that we completed the tender procedure and we completed the construction in 1 year. Now we are finishing to paint the embassy. It will be inaugurated within months by my successor. But the work is done. So it's a continuity in process that you built the embassy, but someone else will be inaugurating it. We all work for the state, so the matter is it's a continuity. That's what I'm saying. Important. The embassy proves the respect of a country for the hosting country. Yeah. That's why we made a big investment, and I hope we will. Everybody will like the new building. Is in front of the American embassy. And I think it will enrich the beauty of the diplomatic enclave. Yeah, certainly. And really, the government, the people, the state of Pakistan, they always have a lot of respect and regard for the people and the government of Italy. So it will be a great symbol of friendship between the two countries. Madam, 4 years itself is a long time. And given the lot of interaction that you had with Pakistani women and the foreign women here, should we expect the Pakistani that wherever you go with Excellency, wherever he is posted, you will be one of the ambassadors of Pakistan? Yeah, interesting question. I said today when I handle over my presidency of Foreign Women Association, we have 155 members, that I'm leaving the country after 4 years. It's not a short period. We are leaving with our heart full of love for this country. The memories are even better and the list of friends is very long. So who knows, we might come back to visit the north and the places that we did not manage during this period. Yeah, certainly, and I assure you that people of Pakistan, they will welcome you anytime, whenever you are here, from Chitral to Karachi. You've been to some of the parts, but I wish that you had seen or you've been to all parts of Pakistan. Excellency, there is a huge, Pakistani community back in Italy. You also talked about.
there are a lot of students, thousands of Pakistani students back in Italy. How they are contributing for the development, for the betterment of Italy itself when they are working over there? Well, of course, whoever is a hard worker has a place in Italy. The first article of our constitution says that Italy is a republic based on work. So through work you earn your social dignity, and you earn the respect of the rest of the population. And Pakistanis are very hard workers, so they are gaining respect. And on the other side, they provide for a great contribution of our economy in many sectors like industry, agriculture, services, and also plenty of other activities. Don't forget, everybody is exchanging text with the family. We can estimate that at least 8 million Pakistanis have a relative in Italy. So I can estimate at least 200,000 chats a day showing Italy's beauties, Pakistani's beauties. So it's a huge amount and made easier by technology. So I would like to quote the case of other countries where we had an immigration, and then the immigrant, when they study our economy, our way of production, and they have savings, sometimes they come back and they open activities which are successful thanks to their experience to Italy. So some of them will stay, many of them are double citizens now, but also some of them will come back and bring a piece of Italy to Pakistan and build their fortune here based on their skills acquired in our country. Any particular message that you want to address to the people of Pakistan, Excellency? Pakistan is a great country with a great and generous heart, and can be a light for the rest of the world. Madam, any message that to the people with whom you interacted and to millions with whom you could not interact, but what's your message to the people? I really trust on the youth of Pakistan, and I believe that they have to stand and fight for showing their potential and their abilities in every field. Thank you very much. Excellency Andreas Ferraresi and Madam Alvama Ferraresi, thank you very much for your time. नादरीन, ये कुछ इम्प्रेशन हैं एक फ़ौरन यानी बैरूनी सफारतकार के पाकिस्तान के बारे में इतनी अच्छी राय दे रहे हैं। यही हमारे मुल्क की खूबी है कि यहाँ जो भी आते हैं कॉन्ट्रेरी टू दी जनरल परसेप्शन, यानी एक अमूमी जो मनफी तासर बाहर पाया जाता है, उससे बरक्स वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात उनके अंदर आते हैं, पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तानियों को देख के। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की यूथ के बारे में वो बता रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट करते हैं। इटली और पाकिस्तान की दोस्ती 75 सालों में आगे बढ़ी है और मज़ीद आगे बढ़ेगी। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।